व्हेन दे आर गोइंग फॉर एन आईपीओ, मैंने आईपीओ जाने का मन बना लिया है, तो क्या तैयारी करनी पड़ती है आईपीओ जाने के लिए, और उसके बाद आईपीओ जाने के बाद क्या प्रिकॉशंस या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि हम कोई पिटफॉल में ना पड़े और हमारा ऑपरेशंस इफेक्ट ना हो. Good afternoon, Indore members. And so basically, IPO is a process. It is the beginning of a journey. तो जैसे when a child is born, जब बच्चा पैदा होता है और चलना सीखता है, that is the process of an IPO. IPO in itself is not an end. It is the beginning of the journey, because उसके बाद आपका actual वैल्यूएशन, ग्रोथ, वेल्थ जनरेशन उसके बाद होता है. What are the things to be looked into, while you are coming to coming for an IPO? So your internal systems have to be in place. You need to have good intermediaries also, जैसे registrar, share transfer agents हो गए, आपके funding facilitators हो गए, merchant banker हो गया. There are a number of intermediaries which are involved in this whole process. और इसमें generally एक offer document बनता है. So when the offer document is made, the merchant banker will do the due diligence. तो जब ये due diligence होता है, that time all the screening happens basically, and it is time consuming. तो अगर ये time short कर दे हम by initially appointing a facilitator, कि he knows what are the things that are looked into by the regulators, by the merchant bankers, तो वो पहले से ही ड्यू डिलिजेंस करके आपको वो प्रोसेस में आपका हैंड होल्ड करके, आपको साथ लेके, वो आपको आपकी जर्नी स्मूथ बना दे. तो आपके सिस्टम्स जो टिक करने हैं चेकलिस्ट के, वो सब टिक करने में आपको हेल्प करेगा. सो these are the things basically which are to be looked into. The basic, very some of the few of the errors that people or promoters do is कि systems place में नहीं है लेकिन IPO के लिए जाना है, वैल्यूएशन इतना नहीं है लेकिन you still want to go for that valuation, उसको बाद में IPO के बाद उसको सर्विस करना is not so easy. या आप ऐसे फैसिलिटेटर को आप साथ में लेके चलते हो जिनको इतना नॉलेज नहीं है. They want to be a part of this journey, but they don't have that capability, experience and knowledge as to how to take it forward. So all these factors are important, in the IPO journey. If you want to make a smooth journey, you have to have people who have experience, who have the knowledge. In case if they are not able to, they should be able to guide you to the right person. कि बाबा चलो आप इनसे मिलिए, and he will be the right person to guide you to get into the IPO process.